two components basically. First one is your diode, right? And first we will look about diode. Okay, so I will just rush through the PPTs and then you can I will just now see the thing is that you need to keep on taking running notes, because electronics is a subject where what we can say that it is a conceptual subject, right? Agar aapko samajh mein aayega, then it is very very simple subject. Okay, so I think that this we have covered till now, right? All these things, laboratory, then assessment scheme, what is CCLCA, right? Okay, so we will start with your topic called as semiconductor diodes. Okay, any difficulty till now? No, sir. No, sir. No, sir. No, Okay, sir. okay. So I guess that you can see my screen properly and you can listen to my voice properly. Yes, sir. So Yes, I will sir. just Yes, yeah. sir. Yes, sir. Yes, sir. So first of all, I would like to ask you that what are the materials, right? What are semiconductor materials? Yes. Yes. What is semiconductor, by the way? What is Semiconductor, it lies between, it is a link between the conductor and an insulator. okay, okay. So one side is conductor and another side is your insulator, and the material which possesses both the properties, right? That is your semiconductor, correct? Yes, sir. है ना? Yes, sir. ओके, तो मतलब इसका मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर में से वो कभी कभी इंसुलेटर जैसे काम करता है और कभी कभी कंडक्टर जैसे काम करता है. ओके, सो Yes, sir. कैसे का, हाँ मतलब कैसे होगा ये सब, कैसे होगा? So actually जो गैप होता है ना वो एकदम इलेक्ट्रॉन्स जंप होते हैं, तो इन द कंडक्टर द गैप इज वेरी स्मॉल, सो ओके इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रैवल वेरी फ्रीली. ओके बट ओके Where the excitation energy for semiconductors is not very high. या ओके. नाउ just see here that what happens, you know, let us keep it very simple. Physics में थोड़ा मतलब थोड़ा complicated रहता है, and chemistry which is getting involved, but the thing is that let us keep it very simple. Let us say that this is your semiconductor. Okay, semiconductor में क्या होगा? There are free electrons are there, right? Okay, now what I will do, you know, let us suppose that the temperature is low, right? The temperature is low, so what will happen, you know, the bonds will not break, and this at low temperature you can say that this semiconductor, there are no free electrons, so what will happen, this will act as an insulator. Okay, now let us say that the temperature is increased, right? The temperature is increased. Let us say that I am heating this material, so what will happen, you know, some of the covalent bonds will break due to the heat. ओके, क्या होगा, हीट के वजह से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा वैसे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कैन यू टेल मी, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग, यस Yes, नो? sir. Yes, एंड sir. Yes, वंस Yes. sir. इलेक्ट्रॉन्स आर Electrons can move स्टार्टिंग, freely. या तो फिर क्या होगा, फिर ये कंडक्शन स्टार्ट होगा, बराबर है? Yes, sir. करेक्ट, ओके. Yes, sir. सो दिस लेक्चर, सो दिस एक वन सेकेंड, ओके. वो ऐका ना सर, recording चालू है तो थोड़ा आरामात बोला. Yes, so what happens, you know, at high temperatures your semiconductor will behave as an conductor. Okay, so this is the property of semiconductor. Now what happens, you know, there are two types of semiconductors. कौन से types है? Intrinsic. Intrinsic and Intrinsic. extrinsic. Intrinsic and Yeah, extrinsic Intrinsic. so semiconductor. intrinsic and extrinsic, right? So basically what is intrinsic semiconductor? जो naturally available semiconductor होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Intrinsic. इंट्रिंसिक, राइट? और एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है कि ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें हम डोपिंग ऐड करते हैं, राइट? मतलब क्या होता है, जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड Impurity. करते हैं, राइट? Impurity तो add. दैट That's आर it. कॉल्ड एज योर Extrinsic Extrinsic semiconductor. Extrinsic. semiconductor. semiconductor. Okay, so depending on what impurity I'm adding, we can classify it as n type semiconductor or p type semiconductor, right? Yes. ये पता है सबको? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah, Yes, yeah, sir. Yes, sir. yeah. Yes, This is sir. basic physics, right? So we are not concentrating on this, right? But we want to concentrate on what are the applications of the semiconductor. Okay, but just a quick revision, right? So this is silicon atom. Okay, so silicon is intrinsic, extrinsic.
Intrinsic, right? Okay. Intrinsic. And what about this copper atom? What is this? This is conductor, semiconductor. Conductor. 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 Great. Conductor. And then this silicon and germanium. These are your So both are Semiconductor. semiconductors. Semiconductors as well. yeah, Semiconductor. Semiconductors. correct. Okay. And then all of you know that there is a covalent bond, right, in the silicon. Okay. So 4 free electrons are there. So all these things, right? Yes. Now what happens, in n-type semiconductor, what we will be doing, we will be adding pentavalent impurities, right? Pentavalent impurities कौन से होते हैं? Arsenic, phosphorus and Antimony, phosphorus, arsenic. very good, very good. So n-type में हम क्या करते हैं? We are adding 5 electrons, right? So what happens, there will be more free electrons in that. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. And in p-type, what we are doing, we are just adding 3 electrons, right? So 3 electrons will make a covalent bond with 3 holes, and one hole will be Remaining. yeah. So one hole will be free. So what happens, in pentavalent, we have free electrons, right? So whenever we are adding pentavalent impurities, we have free electrons, right? And whenever we are having trivalent impurities, we are having free holes, right? Electrons I will represent by a minus sign, and hole I will represent by a hollow circle, right? So whenever pentavalent impurity is there, we will call it as, yes, n type, and whenever trivalent, N-type. we will call it as p type. P-type. 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 So this, I was just checking you know these things or not, right? So here in n-type there is free, yes, electron. There Electron. is free electron. In p-type is Electrons. free hole. Holes. Okay, great. So let us see something, right? Okay. So let us say that this is a semiconductor, okay, and this is p-type semiconductor, okay. So what is present here in p-type semiconductor? Holes. Holes. Holes are present, okay. And let me draw here an n-type semiconductor. In n-type semiconductor, what is present? Electron. Electrons. वेरी गुड. ओके, तो देखिए ये तो हो गया आइडियल केस. प्रैक्टिकल केस में पी टाइप में सी होल्स आर प्रेजेंट, राइट? दे आर इन मेजॉरिटी. कैन आई से होल्स आर प्रेजेंट एंड Yes, हाउ आर sir. दे आर मेजॉरिटी Majority. कैरियर. मेजॉरिटी मतलब क्या? दैट इफ आई एम अप्लाइंग, देखिए नाउ आई विल जस्ट अप्लाई अ करंट हियर, आई विल जस्ट अप्लाई अ बैटरी हियर. यहाँ पर मैंने बैटरी अप्लाई कर दिया, ओके. बैटरी में टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव. सो पॉजिटिव हियर पॉजिटिव फील्ड इंटेंसिटी विल बी देयर, नेगेटिव हियर नेगेटिव फील्ड इंटेंसिटी विल बी देयर, राइट? तो नेचर का लॉ होता है पॉजिटिव गेट्स अट्रैक्शन, राइट? पॉजिटिव गेट्स अट्रैक्टेड विद नेगेटिव, नेगेटिव गेट्स Negative. अट्रैक्टेड विद पॉजिटिव. तो ये होल कैसे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. तो ये कहाँ पर जाएंगे? Towards Negative. 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 So what will happen? Negative. You will get a current. You will get a current in this circuit, right? Okay. Due to what you are getting the current? Due to what you are Flow of holes. Flow of holes. Flow of electron. Flow of holes, right? Okay. So flow of holes क्या है? Majority है, minority है? Majority. Very good. Okay. So again, if I apply the same logic here, if I am applying the same logic here, what will happen? This electrons will flow here and we will get the current which is in the opposite direction of this flow of electrons, right? Now, what is majority in this n-type semiconductor? Electrons, right? Okay. So concept समझ में आया? In p-type semiconductor, right, majority charge carriers are holes. In n-type Holes. semiconductor, majority charge carriers are electrons, right? Electrons. Okay. Now, if you observe properly, in holes, there are, in p-type, there are electrons also present, but they are very Less. minority, right? Minor. Less quantity. Okay. And in n-type semiconductor, there are holes which are present in minority. So can I say that in p-type semiconductor, electrons are present in minority, and in n-type semiconductor,
holes are present in minority. Correct? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So is it correct? ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so Yes, sir. what is happening, you know? Yes, What is sir. happening? I will just go to the meeting. Okay. So yeah. So what is happening? देखिए करंट कैसे फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव व्हाट इज हैपनिंग? रिपल्शन. सो कैन आई से दिस होल इज गेटिंग मूविंग टुवर्ड्स दिस, और चलो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, राइट? नेगेटिव क्या होगा? रिपल्शन होगा. सो ये Repulsion. या इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव Yes, sir. टर्मिनल, मूविंग हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग Yes, ड्रिफ्टेड. sir. यस नो? Yes, sir. Electrons are Yes, getting sir. drifted. Yes, sir. So whatever current you are getting due to drifting of electrons, so that is called as your drift current. So whenever you are getting the current due to movement of the electrons, right, due to the application of external power supply, that current is called as drift current. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, Yes, sir. sir. happening, you know, this is जैसे मटेरियल बना दिया वैसे एक काम करते हैं. आपको क्या करते हैं? Let us have a hall where many people will be gathering. Okay? और जब पूरे लोग गैदर करते हैं तो वो एक हॉल में एक कोने में बैठेंगे क्या? पूरे लोग एक कोने में बैठेंगे? No, sir. No, sir. Yes, no? No, sir. No. What No, will sir. happen? Even even if there are some barricades, if I remove the barricades, what will happen? Now I will change the color, right? So what will happen? These people will get evenly distributed. Yes, sir. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. what is happening? You know, due to the uneven concentration, ड्यू टू तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में भी क्या होता है पता है क्या? अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आके बैठ जाएंगे. जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज निकाल दिया They वैसे क्या get होगा? दिस distributed. इलेक्ट्रॉन्स, right, which are Dispersed. electrons which are concentrated The in one. extra. So what will happen? They will start moving and they will evenly distribute themselves, right? But इसमें इसमें electrons तो move हो रहे हैं ना? Are electrons moving? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There will be some current and है ना? There will be some Yes, sir. Yes, sir. There will be some Yes, sir. current. current Yes. movement of this electron. This current is due to the uneven concentration of the electrons. So that's why this current is called as diffusion current. Correct? Getting? Yes, sir. Yes, sir. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So, any difficulty till now? No, sir. सब बहुत नॉइज हो रहा है कहीं से. Somebody's mic is on. सब बहुत Okay. noise So आ रहा I है किसी request का. all of you to, I request all of you to please keep your mics on mute. Okay. Whenever you want to talk, unmute yourself. Else you just keep your Sir, mics can on you mute because sir can हाँ? you explain diffusion current again? डिफ्यूजन करंट देखिए क्या होता है ना कि व्हेनेवर अ मटेरियल इज फॉर्म्ड, राइट? नहीं तो फिर ये मटेरियल मैंने ले लिया, अभी यहाँ पर सिर्फ मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर देकर रखता हूँ तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस. यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके. sir. तो Yes, फिर sir. जैसे Yes, चार्ज sir. को निकालूंगा वैसे फिर वो इलेक्ट्रॉन्स वहीं पर रहेंगे क्या? No, sir. Distributed. No, sir. They No, get sir. distributed. No, sir. हाँ. So हाँ, जैसे ही electrons, what will happen? They will move from high concentration region to low concentration region, right? Yes. Yes. Yes, हाँ. sir. So whenever the electrons will move from high concentration region to low concentration region, they will be having the current will be there, right? So जो current होगा उस Yes, sir. current Yes, को sir. diffusion current बोलते हैं, right? Yes, sir. Yes, sir. Correct? Okay. Now let Yes, us sir. one thing. Let us have this thing. Okay. So मैं क्या करता हूँ? मेरे पास एक p टाइप सेमीकंडक्टर है. मेरे पास एक p टाइप सेमीकंडक्टर है. p टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा? होल्स होंगे.
So there are holes in P-type semiconductor, and then I have N-type semiconductor with me. So this is your N-type semiconductor. So N-type semiconductor में free क्या है? Electrons. Okay. So whenever I will join this to one P-type semiconductor, whenever I will join P-type semiconductor and N-type semiconductor, right? What will happen? बोलिए क्या होगा? यहाँ पर holes है, यहाँ पर electrons है. So what will happen? This electrons and holes will get attracted Attracted towards. to each other. Very good. So what will happen? You know, they will break this layer, and I can say that there will be एक electron है, एक hole है, तो दोनों मिल गए, क्या बन गया? क्या बन गया? दोनों मिलेंगे तो Neutral Junction. charge. बॉन्ड बन जाएगा. Junction. होल के बीच में इलेक्ट्रॉन, P-N होल के बीच junction. में इलेक्ट्रॉन, होल के बीच में इलेक्ट्रॉन, राइट? सो कैन आई से there will be a bond between the electron and hole, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बॉन्ड बन Yes, गया. sir. एक बार ये बॉन्ड बन गया, राइट? तो बॉन्ड कैसे बनेगा? आई विल जस्ट टेल यू वन मोर टाइम, राइट? ये बॉन्ड ऐसे बनेगा. सो देयर विल बी अ बैरियर. This electrons will sit here, this holes will sit here, right? तो holes को मैं क्या करता हूँ? मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करता हूँ फिलहाल के लिए. So these are the holes, right? And then what happens, you know, this electrons and holes, they will create a bond. They will create a bond, right? Yes, no? Yes. Yes, sir. Now what Yes, happens? sir. Yeah. Now what happens, you know, Yes. these electrons will not allow these electrons to cross this junction, and these holes will not allow these holes to cross this junction. ये अपोज करेंगे, पहले अपोज करेंगे, right? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now what I will do, I will just take two terminals. I will just take two terminals, and I will take out from the one from the P type, another from the N type. Okay. So P type से जो टर्मिनल निकालता हूँ मैं, इसको बोल दूंगा एनोड, डिनोट करूंगा के से, सॉरी एनोड ए से, इसको बोलूंगा कैथोड, इसको डिनोट करूंगा के से. करेक्ट? ओके. सो जो जंक्शन आपका फॉर्म हो रहा है, जो जंक्शन आपका फॉर्म हो रहा है, उसको बोलेंगे हम यस. Yes, PN junction. और PN भी बोलते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पीएन जंक्शन. बैरियर व्हाई? बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ वॉल, राइट? और Yes, sir. और क्या बोलते Yes, sir. बैरियर, पीएन जंक्शन, और इसको क्या Base. बोलेंगे? हाँ, Depletion. व्हाट? डिप्लीशन रीजन, राइट? डिप्लीशन रीजन. ओके. अभी सुनिए, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्जेस है, राइट? सो इफ आई take out one terminal from here, another terminal from this negative charges, and if I try to measure the voltage between this, if I try to measure the voltage between this, यहाँ पर मैं voltage measure कर रहा हूँ, right? So this voltage is called as barrier potential. Potential. Why potential? Because दो अलग अलग वोल्टेजेस है, दो अलग अलग लेवल्स है, तो इन दोनों में के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, राइट? करेक्ट? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. This value comes out to be 0.3 and 0.7. 0.3 for germanium and 0.7 for silicon if it is made up of silicon. Getting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Any problem in this? No, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. No, This sir. device is called as PN junction diode. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? PN junction diode. Why diode? Di means what? Two. And ode comes from electrode, right? So how many electrodes are there? Two. One is anode, one is cathode. Correct? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी देखिए. Now, Yes, sir. just see here that I have every time I will not draw the diagram, right? So this is the symbol anode, cathode. This is the symbol for PN junction diode, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी क्या करूंगा मैं? ये कुछ काम का डिवाइस है, ये डायोड है ना आपका, ये कुछ काम का डिवाइस है. हाँ, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Reversing current. Yes. So the answer is अभी तो कुछ काम का नहीं है. Why? Because it is only a हाँ component. सर. No voltage is applied. हाँ करेक्ट. उसको हमने एप्लीकेशन मतलब कुछ पावर सप्लाई दिया नहीं है, राइट? सो वी नीड टू अप्लाई पावर सप्लाई टू मेक दिस डिवाइस वर्क, राइट? सो whenever I'm applying the external power supply to the device, right? So that concept is called as, क्या बोलते हैं इसको? Biasing. बायसिंग. सुना है आपने कभी? Biasing. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let us do this thing. Let us do the biasing. So biasing हम कैसे करेंगे? How we can do the biasing? So let me apply a power supply here. पावर सप्लाई कैसे अप्लाई करेंगे इन दो टर्मिनल्स के बीच में? कैसे अप्लाई करेंगे? सर पहले It नॉर्मल depends if it और is बाद power में supply. रिवर्स. हाँ तो देखो, पहले नॉर्मल देन रिवर्स. चलो पहले हम क्या करते हैं, एनोड को पॉजिटिव लगाते हैं, कैथोड को नेगेटिव लगाते हैं. लेट अस अप्लाई सम वोल्टेज, करेक्ट? Yes, sir. यस सर. ओके. तो यहाँ पर भी सेम डायग्राम है ना, Yes, sir. प्लस माइनस वी. यस नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ओके. अभी ये V को क्या करते हैं, V को बढ़ाते हैं 0 से लेकर 10 वोल्ट्स तक, चलेगा? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अभी 0 से लेकर 10 वोल्ट्स तक बढ़ाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे बोलिए? हेलो. तो देखिए, चलो 0 से बढ़ाते हैं, राइट? तो 0 से बढ़ा लिया, राइट? तो पॉजिटिव इज कनेक्टेड हियर, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड हियर, नेगेटिव नेगेटिव. सो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन. दिस होल्स विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स होल्स, राइट? तो यहाँ पर Yes, sir. ये दीवार है ना, यहाँ पर बैरियर है. तो बैरियर कब ब्रेक होगा? 0, राइट? सर ब्रेकिंग पोटेंशियल रीच करते ही एक सर्टेन पोटेंशियल होगा. करेक्ट. तो इसका लेट अस से दैट दिस इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन. सिलिकॉन का पोटेंशियल कितना है आपका? 0.7 वोल्ट्स. तो जब आपका वोल्टेज बढ़ाएंगे हम 0 से लेकर 0.6 वोल्ट तक, तब क्या होगा? तब करंट फ्लो होगा सर्किट में? No, बिल्कुल sir. सर. नो No, सर. sir. बिल्कुल नहीं करंट फ्लो होगा. लेकिन जैसे ये 0.7 के ऊपर चले जाएगा, व्हाट विल हैपन? द Current will start flowing. flowing from positive to negative, Negative. because these Negative. holes will go here, these electrons will come here, and always the current will flow in the direction of holes or in the opposite direction of the electrons, correct? Yes, sir. यस सर. yes, sir. Yes, sir. Okay. So in forward bias, current flows through the diode, correct? Yes, no? यस Yes, sir. Okay. तो चलो Yes, इसको sir. ना हम इसको एक ग्राफ के मतलब we will just plot a graph. Okay. So let us say that this is your x-axis, y-axis. Okay. So let us suppose that I will just plot current on y-axis and voltage on x-axis. Okay. And I will use red color for plotting the current. Okay. So what will happen? Let us suppose this is 0.7 volts. So 0.7 तक क्या होगा? There no current will flow. नो करंट. Even if you are No increasing the voltage, right? Even if you are increasing the voltage, no current will form. And after 0.7, with increase in the voltage, your current will increase, correct? यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, Okay. sir. तो इसको बोलेंगे आप, this is a graph of forward voltage versus forward current. तो इसको आप बोलेंगे forward characteristics. क्या बोलेंगे इसको? Forward characteristics. Forward character. Forward characteristics. क्योंकि ये डायोड में करंट फ्लो हो रहा है, तो हम बोलेंगे इसको दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस. क्या बोलेंगे डायोड को? Forward biased. सिंपल, Yes, sir. Yes, sir. इजी है. Yes, sir. ओके. नाउ लेट मी this thing. Okay. Now what happens, you know? I will just take one more diode. Anode, cathode. Now I am applying a power supply, but in the reverse way. Negative is applied to anode, positive is applied here, right? So this is negative,
This is positive. So here positive field will get created and here negative field will get created. So what will happen? Negative positive attraction, Attract. negative positive Attraction. attraction. So ये जो barrier है ये break होगा क्या? No, sir. बिल्कुल नहीं, right? No, sir. So instead No, sir. barrier इसका width जो था ये पहले 5 Increase होगा. सेंटीमीटर था वो increase Increase. right? Width will getting increase. So is there any current which is flowing in this circuit? No, sir. No, 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 There sir. will no current No. flowing. Is equal to 0 means what? No current is flowing in this circuit, right? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ I is equal to 0 means what? Current is not flowing in this circuit, right? So whenever Yes, sir. current is not flowing in this circuit, it is called as reverse bias. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what happens, you know? Now let us again increase the voltage from 0 to let us say 10 volts and then so 0 से 10 volts increase करेंगे कुछ होगा? No, sir. No, sir. Sir. No, sir. No, नहीं sir. होगा, No, right? sir. Okay. 50 volts करेंगे कुछ होगा? No, sir. No. No, No. sir. ओके ओके अभी देखिए यहाँ पर क्या है बीच में Barrier. Barrier. बैरियर है बैरियर में कौन होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर होता है Holes or electrons. Holes. तो अभी क्या होगा पता है नाउ एट 50 वोल्ट्स राइट ये काफी ज्यादा वोल्टेज हो गया राइट दिस 50 वोल्ट्स विल ब्रेक दिस कोवेलेंट बॉन्ड राइट और ये जो इलेक्ट्रॉन है राइट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा राइट होल यहाँ पर जाएगा एंड व्हाट विल हैपन यू नो देयर विल बी सम करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन दिस ओके नहीं तो फिर एक सिंपल आपको बताता हूँ मैं जब आप ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना तो व्हाट विल हैपन यू नो हीट विल इंक्रीज एंड व्हाट विल हैपन द डिवाइस विल गेट डैमेज करेक्ट ओके Yes, sir. तो अभी मैं क्या करता हूँ अभी मैं यही ग्राफ को एक्सटेंड करता हूँ राइट अभी मैंने बैटरी रिवर्स कर दिया है राइट तो ये माइनस भी आ गया बैटरी का Yes, sir. टर्मिनल मैंने रिवर्स किया ना Yes, sir. फिर करंट का डायरेक्शन भी पहले क्लॉकवाइज घूम रहा था अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यस Yes, sir. okay okay now what happens you know whenever I'm applying the voltage in reverse direction current is there No. No, sir. no No. No, sir. No, so sir. that's why zero तो ग्राफ अपवर्ड्स नहीं जाएगा. at some point let us say at 100 volts what will happen There will be small flow of current. what will Small happen? flow. Large amount of current will flow in the circuit and large amount of current will flow in the circuit and the diode will get damaged Damaged. so देखिए सुनिए so this is the scenario समझ में आ रहा है आपको क्या चल रहा है Yes. Yes, sir. Yes, 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 sir. Yes, sir. good now just see here so ये हमारा नॉर्मल डायोड है इसको मैं बैरियर पोटेंशियल बोलता हूँ ओके नाउ ओके चलो फिर से अभी फॉरवर्ड ओके फिर से अभी फॉरवर्ड बायस में जाते हैं हम लोग राइट लेट अस कीप इट इन फॉरवर्ड बायस ओके सो फॉरवर्ड बायस में कैसे रखेंगे आप एनोड को पॉजिटिव कैथोड को नेगेटिव ओके Negative. ब्लू कलर यूज Yes. कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए आप होल्स में पी टाइप में क्या रहेगा Holes. नहीं मेजॉरिटी होल्स माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में क्या रहेगा Majority Majority. electrons. Majority Minority. minority. करेक्ट ओके अभी देखिए क्या हो रहा है पता है क्या अभी देखिए व्हाट हैपेंस यू नो दैट इन रिवर्स बायस ओके फॉरवर्ड बायस में माइनॉरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट बिकॉज इट विल फ्लो करंट विल फ्लो ओके बट व्हाट विल हैपन व्हेन दिस इज इन रिवर्स बायस right when this is in reverse bias so this is positive and this is negative so what will happen negative repulsion positive attraction so what will happen these holes will go here electrons will come here and there will be very small current which is flowing very small current which is flowing and that current is due to what majority charge carrier or minority charge carrier Minority charge. Minority. 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 so that
current is called as reverse saturation current. क्या बोलेंगे उसको? reverse saturation current. Reverse ये saturation. प्रैक्टिकल का बात कर रहा हूं मैं, राइट? आइडियल में ऐसा होता है, प्रैक्टिकल का ग्राफ मैं येलो कलर से आपको ड्रॉ करके बताता हूं, राइट? सो इन रिवर्स बायस, when you are applying the reverse bias, very small amount of current will flow through the diode, and that current, right? ये देखिए I है ना, तो रिवर्स में इतना ही करंट फ्लो हो रहा है, राइट? मतलब इसका विड्थ कितना है? इतना. So that current is called as I naught, and that I naught is called as reverse saturation current. और इसको क्या बोलेंगे आप? Current due to minority charge carriers. Current due to minority charge carriers. Correct? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. And then after some time, right? After some time, what will happen? Let us say that breakdown voltage, right? At this point, the diode will get damaged. So ये point को क्या बोलते हैं आप? Break breakdown down voltage. Breakdown. पॉइंट, राइट? और इस पॉइंट पे ये 100 वोल्ट्स पे ब्रेक डाउन हो रहा है, सो ये इसको बोलते हैं आप ब्रेक डाउन VBR, मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. आइडियली क्या होता है, यहाँ से थोड़ा करंट बढ़ना चालू होता है, right? And you will get the graph like this. So this, at this point, what is happening? Your conduction is getting started. So this is called as your cut-in voltage. क्या बोलते हैं इसको? Cut-in voltage. Cutting voltage. Cutting voltage. नहीं तो इसको क्या बोलेंगे? breakdown voltage. Cut-in voltage नहीं तो threshold voltage. threshold voltage. Yes. Correct? Yes, sir. Yes, So sir. all of you know these things. Simple. Yes. Yes. Is it Yes, simple? sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Oh, very Yes, good. sir. Very good. Okay. Now, so these are called as your characteristics. These are called as your reverse characteristics. This is called as your forward characteristics, and this is called as your characteristics of PN junction diode. This is called as the characteristics of PN junction diode. Any problem in this? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. So this you can see, this you can correlate, right? So this is a PN junction diode, okay? And this is the symbol of the diode which we have seen, and whatever, 1 second, okay? Yes, so this is your PN junction diode, and depletion region is between P-type and N-type semiconductor. Now, this is the process where diode is in forward bias. This is the process where the diode is in forward bias, right? And this is the process where the diode is in reverse bias. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. What is the difference Yes, between sir. forward bias and reverse bias? See the depletion region, it's very narrow. Thin. And yeah, and in reverse bias, the depletion region is Broad. thick, Broad. right? So Yes, sir. this depletion region will oppose the flow of current, Current. reverse bias. So as we have seen, right, this is the forward characteristics. This point where this point, right? Yeah, can you note this point? This point where there is the conduction starts, that is also called as knee point. क्या बोलेंगे उसको आप? Knee point. Knee point. Knee point. Knee point. Okay, so this is the forward characteristics of the diode. Okay, and another knee point where the breakdown voltage is there. Okay. Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes. This is complete VI characteristics curve.
Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So yes. Now let us see diode models, right? Okay. इससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक और दे देता हूँ. सिंपल है ना? इट्स नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड. आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर डन, राइट? आपको यूनिट नंबर 1 पूरा समझ में आएगा, बिकॉज आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट दे रहा हूँ उसी का एप्लीकेशन हम यूनिट नंबर 1 में करेंगे, राइट? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, सुनिए, अब सिंपल मैं आपको समरी दे देता हूँ, राइट? आपको देखिए, द वे ऑफ माय टीचिंग विल बी, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं समरी दूंगा. जो कुछ कंसेप्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं वो कंसेप्ट्स का समरी दूंगा, एंड देन वी विल यूज दैट कंसेप्ट्स, राइट? तो ये समरी काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो Okay, sir. दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ डायोड. In forward bias, anode is connected to positive. Sir, your voice is low. In forward bias, anode is connected to सर आपकी आवाज बहुत सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. भी आ रहा है आवाज? हाँ. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So Now in it is forward fine. bias, anode is connected to positive, cathode is connected to negative, right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Okay. sir. Yes, In sir. forward bias, your diode will allow the current to flow through it. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So current कौन से सर्किट में से फ्लो होता है? Means I can replace the diode which is in forward bias by a Conducting wire. short circuit. Conducting wire, correct. Short circuit, right? And what is resistance of a conducting wire? Barrier Zero. voltage. 0 ohms, right? Yes, sir. Okay. Sir. Ideally, sir. Now in reverse bias, what happens? In reverse bias, No current current. will Current will not There is flow. no Current, no there is current. no current. There is current no will current flow. not at all flow through the diode. So this diode I can replace it by open circuit. So in Open reverse bias, I can replace the diode by a open circuit, Open circuit. and open circuit and open circuit is No. having how much impedance or how much resistance? Zero. Zero. अरे zero Infinite. Infinite. Infinite resistance. correct. Okay, so forward bias diode will act as a short circuit, reverse bias diode will act as a open circuit, right? Okay. मतलब देखिए, ये जो डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में होता है, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए सीधा शॉर्ट सर्किट से, राइट? बिटवीन ए एंड बी. ओके. एंड इन रिवर्स बायस ये जो डायोड है, जहां जहां Open पर डायोड है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए ओपन सर्किट से, करेक्ट? बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. मतलब ए और बी के Yes, बीच sir. में करंट फ्लो होगा, ए और बी के बीच में करंट नहीं फ्लो होगा. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. यस. So this is the summary, right? Yes, This is sir. the summary, and then Yes, sir. yes. Now diode approximate models are there. So in forward bias, I am saying the same thing. Diode is replaced by short circuit, and reverse bias diode is replaced by open Open circuit. circuit. Open circuit. को सुनिए, शॉर्ट सर्किट को हम बोलते हैं ऑन स्विच, राइट? और ओपन सर्किट को हम बोलते हैं ऑफ स्विच, करेक्ट? बराबर है ना? स्विच ऑन Yes, किया sir. तो करंट फ्लो होगा, स्विच ऑफ किया तो करंट नहीं फ्लो होगा, राइट? So this is your on switch and off switch. Okay, so this is the characteristics of ideal diode. This is the characteristics of ideal diode. Means what? In reverse bias no current will flow. In forward bias what will happen? Infinite amount of current will flow. Yes. Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So any problem in this? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. So you are all are very fast grasping these things, right? Good. Okay. Thank you, sir. So in reverse bias, whatever current is flowing, that is called as IR. So IR is 0, right? In forward bias, whatever current is flowing, that will be equal to Yes. divided by R.
राइट? ओके, नाउ सी प्रैक्टिकल डायोड में क्या होगा? प्रैक्टिकल डायोड में आपका करंट फ्लो होने के लिए आपको बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो Yes, डायोड sir. का जो बैरियर पोटेंशियल है इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, राइट? और इसको क्या बोलते हैं आप? फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ डायोड। क्या बोलेंगे? व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, the voltage across the barrier is called as forward voltage. सिलिकॉन के लिए कितना होगा ये? 0.7 0.7 0.7. मटेरियल यूज करते हैं हम लोग सिलिकॉन, राइट? सो इसीलिए ये ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाएगा, इट विल कम एट 0.7. कंडक्शन कहां पर स्टार्ट होगा? आफ्टर 0.7 वोल्ट्स, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस, सिंपल है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is Yes, your sir. approximate diode model. Okay, now practical diode, right? So voltage across it when forward by, right? So this is the practical diode what we have seen. Okay, and now this is called as your diode current equation, right? So this is the equation from physics as it is we have copied. So this is I is what? I is nothing but the current which is Right. flowing in the diode, right? In which bias? In forward bias, right? Reverse bias में current flow होता है क्या diode में? No. नहीं. No, sir. Ideal में नहीं No, होता, no, sir. प्रैक्टिकल में थोड़ा सा करंट फ्लो होता है एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज आई नॉट। उसको क्या बोलते हैं आप? रिवर्स Saturation current. saturation current. वेरी गुड। ओके, तो देखिए दिस करंट इज डिफाइंड बाय आई नॉट इन ब्रैकेट ई टू द पावर वी डिवाइडेड बाय नीटा वी टी माइनस वन। व्हाट इज आई नॉट? डायोड सैचुरेशन करंट, नहीं तो फिर हम क्या बोलेंगे इसको? रिवर्स Reverse सैचुरेशन। saturation. Reverse saturation. What is V? V is nothing but the voltage applied Voltage across the diode, apply. right? मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है that is V. Okay. What is I? I is nothing but the current which is flowing through the diode. Okay. What is neta? Exponential ideality factor, right? Two. It is fixed. Two for silicon, one for germanium. What is VT? VT is nothing but the volt equivalent of the temperature, right? Volt equivalent of the temperature is T divided by 11,600, right? Or we can say VT is 0.026 volts, right? Yes, And sir. this charge sir. on electrons 1.6 into 10 to the power minus 19, K is Boltzmann constant, and T, right? If you want to calculate by using the formula. So this is the equation you need to keep in mind, because maybe a numerical based on formula may come. Okay, any problem in this? No sir. No, sir. No, sir. So this is an example which is based, right? So again, determine the forward voltage and forward current. मतलब आपको क्या क्या ढूंढना है? V and I, right? Across the diode, right? In this figure, find the voltage across limiting resistor. इसके across भी हमें resistor में voltage कितना है वो ढूंढना है, right? And what is given? We have assume RD is equal to 10. So let us see. V10, that is capital V, is nothing but your 10 volts, correct? Yes, sir. Okay. Now, what is given? What is given? VF. आइडियल है, आइडियल है तो फॉरवर्ड वोल्टेज जीरो, मतलब जो 0.7 वोल्ट था ना सीरीज इसका, तो वो क्या बोलेंगे हम? जीरो बोलेंगे, राइट? नाउ IF, करंट ढूंढना है हमें। सो हाउ टू फाइंड द करंट? देखिए सुनिए, ये डायोड कैसा है? डायोड कौन से बायस में? फॉरवर्ड, रिवर्स? Forward bias. Forward. फॉरवर्ड Forward. बायस में इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो। 0. ओके, Yes, sir. सो करंट क्या होगा फिर इसमें? ये Flow करेगा. वोल्टेज, ये आपका रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज द करंट? IR. IR. V divided by R, I by R. correct? So it will be 10 divided by 1 K. कितना हो गया ये? 0.01. 10. 10 milli, right? So can I say the current is 10 milliohms? Sorry, Yes, sir. 10 milliamperes, Yes, correct? sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Now what is voltage across the resistor? Again it is 10 volts only, right? Yes. क्योंकि जितना वोल्टेज सप्लाई से जा रहा है उतना पूरा वोल्टेज कहाँ पर डिसिपेट हो रहा है? रजिस्टर में डिसिपेट है ना।
पूरा का पूरा वोल्टेज, यहाँ पर जो कुछ वोल्टेज है, यहाँ पर जो कुछ वोल्टेज है वो यहाँ पर जा रहा है, और इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है अभी निकाला है हमने। हाँ, इसमें से करंट 10 कितना flow million. हो रहा है? 10 million. 10 million. 10 million. Milliampere. 1 K is 10 right? minutes. So what is the voltage across the resistance again? 10 volts. 10. Yes, no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So यही तो ढूंढना था हमें, right? Find the voltage across limiting resistor. समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी सुनिए, अभी अगर ये तो आइडियल डायोड था ना, प्रैक्टिकल डायोड अगर होता, प्रैक्टिकल डायोड होता तो फिर हम क्या करते थे यहाँ पर? प्रैक्टिकल डायोड होता Resistance. Resistance. 0.7 volt. हाँ 0.7 वोल्ट्स का 0.7. वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करते। रेजिस्टेंस, चलो रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं आपको अगर चाहिए तो। ओके, सो यू हैव टू यूज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, राइट? मतलब कैसे, सिंपल बताता हूँ मैं आपको। इसका रेजिस्टेंस हम फिर भी कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज 1 किलो ओम्स, मतलब क्या 1000, और इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम्स। सो कैन आई निग्लेक्ट 10 इन फ्रंट ऑफ 1000? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर इसका sir. रेजिस्टेंस कैसे आएगा? ओके, तो फिर अगर कंसिडर कर भी लिया तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 10 ohms, राइट? नाउ कैन यू अप्लाई योर KVL? सो इट विल बी, व्हाट इज द करंट? 10 माइनस 0.7 वोल्टेज, वोल्टेज कितना है? 10 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 1010 ohms, राइट? सो ये आएगा आपका करंट। यस, नो? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली अगर मैंने 1000 कर लिया, सो इट विल बी 9.3 मिली एम्पियर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नीचे किलो है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मिली, करेक्ट? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। सो ये जो मैंने बताया तो ये सिर्फ ओम्स लॉ के ऊपर से बताया है, राइट? सो डोंट वरी, राइट? दिस इज द one of the example, right? Any problem in this example? Anyone? No, sir. Okay, so this is the diode, right? So अभी तक हमने जो डायोड देखा है उसका हमने एप्लीकेशन नहीं देखा है, right? So what is the application of the diode? We can use the diode in rectifier, we can use the diode, right? Yes, sir. We can use the diode in rectifier, we can use the diode in DC power supply, we can use the diode as a switch, we can use it as voltage regulator, current protection circuit, voltage multipliers, and lot of examples are there where we can use the diode. Okay, simple, आप day to day life में LED use कर सकते हो, right? So that is your diode. Okay, so your syllabus starts from here. First application of your diode is we can use it as a rectifier, correct? Okay, so we will stop here, and tomorrow we will start with one of the application of rectifier. Okay, any problem in this? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अभी अटेंडेंस रह गया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अटेंडेंस कैसे लिया जाए? Google form. सिर्फ गूगल फॉर्म से ले सकते हैं। गूगल फॉर्म से ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. वो मैं बताता हूँ आपको, मतलब गूगल फॉर्म में क्रिएट करके आपको शेयर करता हूँ, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू आल्सो, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, चलो, सो वी विल स्टॉप हियर। चलो, बाय बाय, टेक केयर। Yes, sir. Bye. Thank you. Thank you, sir. PDF आप शेयर करोगे? सर ये PPT शेयर करो। हाँ,